Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Today we will be talking about plastics. You can see different products of plastics. Here you can see. So we will discuss them one by one. These are the topics which we will discuss. And here we are in week number 7. Yeah, this is by mistake. This is week number 7, not week number 8. So plastics. Structure of plastics. We will discuss about the structure of plastics, then about the polymer technology, followed by the types of plastics, properties of plastics, and finally we will talk about the practical uses of plastics as a construction material. So let's talk about the definition of the plastics. Plastics are synthetic materials. I hope you people know about synthetic materials. Synthetic materials are those materials which you can make from other materials, and these are not natural materials, which are made by polymerization of small organic molecules having higher molecular weight. किस चीज से आप इसको बना सकते हैं? बाय पॉलीमराइजेशन प्रोसेस आप इसको बना सकते हैं ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैविंग हायर मॉलिक्यूलर वेट. इससे आप प्लास्टिक बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल कौन कौन सी चीजें? बैकलाइट, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पीवीसी एटसेट्रा. Plastics are actually synthetic polymer, or we can define it in this way as well. Plastic is a material consisting of a wide range of synthetic, that is artificial or semi-synthetic organic compounds that are malleable, that are flexible, so that you can mold it into any shape, and so can be molded into solid objects. So this is also in this way you can also define the plastics. Let's discuss these terminologies which we have in the plastic topic. So the first one was polymer or polymerization. A polymer is a substance which is made from smaller molecules bonded together. A polymer is a substance which is made from smaller molecules bonded together. So when smaller molecules are bonded together, then they are making a substance which is called polymer. What is monomer? A monomer or a molecule that is bonded together with another similar molecule to form a polymer. A molecule that is bonded together with another similar molecule. So when it is combined together with another similar molecule, it will make a polymer. I hope you people have studied this in the chemistry. Yeah, पढ़ा है बेटा आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. कुछ Yes, याद sir. है? Yes, sir. Okay, Yes, sir. let's talk about, this is good that you people remember this. So let's talk about the side chain. कि side chain क्या होता है और main chain क्या होता है या backbone क्या होता है इसमें? The side chain is a hydrocarbon branching element of a molecule that is attached to a larger hydrocarbon backbone. So you can see over here, this is the backbone, and these are the suspended or attached components or elements. So this is the side chain. You can see the side chain. Let's come towards the main chain or the backbone, that the linear chain to which all other chains. You can see this chain, to which all other chains, long or short or both, may be regarded as being pendant or hanging. These are hanging. So this is the difference between side chain and main chain. Now let's talk about the structure of plastics. Most of the plastics contains organic polymers. I hope now you remember what is polymer. The vast majority of these polymers are formed from chains of carbon atoms favored or with the addition of oxygen, nitrogen, or sulfur. The chains comprise many repeat units formed from monomers. Each polymer chain will have several thousands repeating units. Each polymer chain can have several thousand repeating units. You will see this in the next slide. Here you can see these are the monomer, this is the polymer, this is polypropylene, polyvinyl chloride, polystyrene, and this is Teflon, if you remember from the previous slides.
The backbone is the part of the chain that is on the main path, linking together a large number of repeat units, which you have seen in the figure, to customize the properties of plastic. Now, if you want to change the properties of the plastic according to your requirements, what you can do? Different molecular groups hang from this backbone. These pendant or these hanging units are usually hung or suspended on the monomers before the monomers themselves are linked together to form the polymer chain. It is the structure of these side chains that influences the properties of the polymer. Now, polymer की जो property है वो किस चीज से affect होती है, किस चीज से change होती है? जी बेटा, anyone in the class किस चीज से affect होती है? टेम्परेचर से जी, टेम्परेचर से इसके अलावा मॉइस्चर फंक्शनल ग्रुप से इधर लिखा है, इधर अगर आप पढ़ लेते हैं या क्लास में मौजूद होते हैं तो आप डिफरेंट समझ जाते हैं। डिफरेंट ग्रुप से जी, ये जो मॉलिक्यूल जो हैंगिंग पोजीशन में होते हैं, ये दोबारा जरा पढ़ इसको। टू कस्टमाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक, टू चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लास्टिक, टू गेट द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लास्टिक, डिफरेंट मॉलिक्यूलर ग्रुप्स। कौन-कौन से मॉलिक्यूलर ग्रुप्स? दैट हैंग फ्रॉम द बैकबोन। You can play with the components or with the arrangement of those molecules or the hanging molecules or with the properties of those molecules. These pendant units are usually hung or suspended on the monomers before the monomers themselves are linked together to form the polymer chain. It is the structure of these side chains or these hanging components or these suspended components that affects, that change the properties of the polymer. अभी उम्मीद है समझ आई होगी आप लोगों को। The molecular structure of the repeating unit can be fine-tuned to influence the specific properties in the polymer as well. The molecular structure of the repeating unit. If you can play with the molecular structure of these repeating units, then you can also change or affect or influence the specific properties of the polymers as well. So here you can see these are the monomers and these are the polymers. Chemical structure of polymers. Here you can see these are the plastics, different types of plastics you can see. These are the fibers. I hope everybody has seen this. And these are rubbers. So these all are polymer technology. Polymer technology can be described in briefs as the manufacturing, processing, analysis, and application of long chain molecules. पॉलीमर टेक्नोलॉजी आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे, कैसे इसको डिफाइन करेंगे? It is the manufacturing, the processing, the analysis, and the application of long chain molecules is called polymer technology. Polymer technology includes production of innumerable plastics, rubbers, and fibers by combining various chemicals. Various chemicals को मिलाने से आप क्या बना सकते हैं बेटा? मुख्तलिफ किस्म के प्लास्टिक्स बना सकते हैं, रबर्स बना सकते हैं और फाइबर्स बना सकते हैं। Materials that are typically classified as polymers include, कौन कौन से इसमें आ जाते हैं पॉलीमर में? प्लास्टिक्स इसमें आ जाते हैं, पेंट्स आ रहे हैं इसमें, रबर, फोम्स, एडहेसिव्स, वार्निशेस एंड मेनी मोर, ये सारे इसमें आ रहे हैं पॉलीमर्स में। Nowadays, industries that are totally dependent on polymers include information technology. Information technology में आप देखें आपके जितने ऑप्टिकल फाइबर्स और बाकी सारी चीजें ये पॉलीमर टेक्नोलॉजी से आ रहे हैं। एरोस्पेस में आप देखें, एरोस्पेस में आपके जितने भी कंपोनेंट्स यूज होते हैं, जितने भी चीजें इस्तेमाल होती है, दैट इज आल्सो कमिंग फ्रॉम दिस पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीमर्स। क्लॉथिंग इंडस्ट्री को आप देखें, सो दिस इज फ्रॉम पॉलीमर्स। मेडिकल के काफी सारी चीजें जो बनती है, that is we will discuss this in the coming slides. And motor manufacturing, buildings, packing, and many more, these are the polymers which we are using in these technologies, or we can practically apply these polymers. As a study field, polymer technology is not well known among potential students, but has vast employment potential. कहते हैं कि काफी सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है पॉलीमर टेक्नोलॉजी का, क्योंकि इसको इतना ज्यादा हम पढ़ते भी नहीं है और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी हमें पता नहीं होते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा जॉब्स मिल सकते हैं।
आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि फैसलाबाद में जितने भी इंडस्ट्रीज थी, खासकर जो कपड़े की इंडस्ट्री थी, वे मजदूर नहीं मिल रहे। उन्होंने दोबारा स्टार्ट किया है 1990 के बाद 2020 में अभी तक वहाँ पे जितने भी इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई हैं, वहाँ पे मजदूर नहीं मिल रहे। तो इसमें काफी सारा पोटेंशियल है जॉब के हवाले से। It therefore often happens that students enter the polymer field from areas such as analytical chemistry, analytical chemistry वाले फील्ड से आ जाते हैं या इंजीनियरिंग की फील्ड से आते हैं, and have to undergo retraining to function effectively in the polymer environment। कहते हैं कि उसको दोबारा ट्रेनिंग देनी पड़ती है, फिर उसके बाद वो वर्किंग एनवायरनमेंट में प्रॉपरली काम कर सकते हैं। Chemistry forms the basis and starting point of polymer। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से आ सकता है आपके पास? दैट इज कमिंग फ्रॉम द केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी, बट केमिस्ट्री पॉलीमर टेक्नोलॉजी, बट इट आल्सो लीन्स ऑन अदर साइंटिफिक स्टडी एरिया सच एज इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ से भी इसको मतलब केमिस्ट्री इज द मेन basis for this polymer technology, but engineering and manufacturing is also supporting and helping this technology. Types of plastics. There are 7 types of plastics which include only some variety of plastics are recyclable. You can recycle them and you can make again the same stuff or different stuff from there. Number 1 is polyethylene terephthalate, PET or PET. You will see this in the next slide. High density polyethylene, HDPE, polyvinyl chloride, PVC, low density polyethylene, LDPE, polypropylene, PP, polystyrene or styrofoams, PS. Miscellaneous plastics includes polycarbonate, polylactide, acrylic, acrylonate. How to pronounce this one? जी बेटा, Acrylonitrile. acrylonitrile, Acrylonitrile, butadiene, okay, styrene, fiberglass and nylon, all these are miscellaneous plastics materials. Let's discuss this one by one. Polyterephthalate, PE or PET. This variety of plastic is widely used in disposable water bottles. Here you can see this can be used in disposable water bottles. It is safe to use as long as it is disposed of within a short period of time. ठीक है, अब जब तक आप इसको यूज करते हैं तो ये सेफ रहता है. दिस इज बिकॉज इट often attracts बैक्टीरिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करता है, तो उसके बाद आपको ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. दिस प्लास्टिक टाइप इज रिसाइक्लेबल. आप इसको रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा ये चीज बना सकते हैं या कोई और चीज भी बना सकते हैं इससे. The next one is the high density polyethylene, HDPE. Here you can see, I hope everybody have seen these pipes. High density polyethylene, HDPE or polyethylene high density, PEHD, is a thermoplastic. Thermoplastic is that material when you are giving heat to them, it becomes soft. Polymers produced from the monomer ethylene. These are the polymers which you can produce from the monomer ethylene. It is sometimes called alkethene or polythene when used for HDPE pipes. ये भी आप इसको ethane भी कह सकते हैं, polythene भी होते हैं, उसमें भी आप यूज कर सकते हैं, जूस बॉटल में यूज कर सकते हैं एंड कर सकते हैं. Products made of this plastics are opaque in color. What is meant by opaque? Okay, beta. So I asked you, what is meant by opaque in color? Opaque क्या होता है? सर जिससे नजर ना आ सके, जिस कोई जो ट्रांसपेरेंट ना हो, जिसके आर पार आप न देख सके. Good. यस सर. Plastic type is also recyclable. You can recycle this plastic.
Polyvinyl chloride, PVC, polyvinyl chloride. I hope you know this. Polyvinyl chloride is the world's third most widely produced synthetic plastic polymer. कितने नंबर पे हैं? Third most. Because everywhere you can see we are using these plastic pipes and these materials. After polyethylene and polypropylene, which one is the number one and which one is number two? Polyethylene and polypropylene. This is 1 and 2, and this one is PVC is third. About 40 million tons. कितना बेटा? 40 million tons are produced per year. हर साल 40 million ton PVC हम प्रोड्यूस करते हैं. PVC comes in two basic forms. कौन कौन से फॉर्म में आ रहे हैं बेटा? दो फॉर्म में. One is rigid and the other is flexible. Rigid PVC is used in construction, for pipes and in profile applications as doors and windows. Rigid PVC है वो पाइप्स में यूज करते हैं, और आप लोगों ने ये आप लोगों ने देखा होगा, ये जो चौकाट टाइप का होता है, देखा आप लोगों ने? Yes, sir. जहाँ पे ये जो एल्यूमिनियम के जो पैनल्स आते हैं. Yeah, this is also made from this PVC. While flexible PVC is used in electrical cables, insulations, and plumbing, etc. This one is rigid one. और ये जो इलेक्ट्रिसिटी के जो केबल्स होते हैं आप लोगों ने देखे होंगे, वहाँ पे इंसुलेशंस के लिए और प्लम्बिंग के लिए जो मटेरियल्स हम यूज करते हैं, दैट इज फ्लेक्सिबल. कुछ जगहों पे हमें फ्लेक्सिबल चीज़ों की भी जरूरत होती है, फ्लेक्सिबल पीवीसी की. सो this is the difference between these two. This plastic type is durable. ये काफी ड्यूरेबल होता है. This plastic type is not recyclable. इसको आप रिसाइकल नहीं कर सकते बेटा. The next one is the low density polyethylene. Low density polyethylene, LDPE. This is safe for human use but not exactly recyclable. This is safe for human use. आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन एग्जैक्टली रिसाइकल नहीं कर सकते इसको. इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ग्रोसरीज बैग्स एंड अ वैरायटी ऑफ बॉटल्स. काफी सारी चीजें आप इससे बना सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज द पॉलीप्रोपाइलीन. क्या चीज है बेटा? पॉलीप्रोपाइलीन, पीपी. इट हैज वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस. Polypropylene can be used in a variety of buildings and construction applications, including siding, ear and moisture barriers, membranes. आप इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं. कारपेट टेक्सटाइल में आप इसको यूज कर सकते हैं. शीट्स एंड फिल्म्स आप इससे बना सकते हैं, which can be used as insulating building materials. You can wrap your building with the help of this materials. Industrial adhesives आप इससे बना सकते हैं. ये जो स्क्वाश टेप वगैरह है, ये एंड टेप्स ये बना सकते हैं इससे. एंड प्लास्टिक पार्ट्स इंक्लूडिंग एंड पाइपिंग के जो मुख्तलिफ जो पार्ट्स यूज होते हैं वह भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. इट इज आल्सो यूज्ड इन मेडिसिन बॉटल्स में यूज होता है, स्ट्रॉज में यूज होता है. एंड अ वैरायटी ऑफ कप्स आर मेड ऑफ पॉलीप्रोपाइलीन. इससे मुख्तलिफ किस्म के कप्स भी आप बना सकते हैं. इट इज सेफ, ये सेफ है एंड रिसाइक्लेबल है बेटा. द सिक्स्थ वन, द सेकंड लास्ट, polystyrene or styrofoam. I hope everybody have seen this. Polystyrene blocks are used as building material. Building में आप इसको यूज कर सकते हैं. Polystyrene blocks are used in construction as permanent insulation in building. इसको एक permanent insulation material आप building में इस्तेमाल कर सकते हैं. The blocks are energy efficient and ensure optimal insulation not only for walls of buildings but also the roofs and even फ्लोर्स. इसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े आराम से यूज कर सकते हैं. डिस्पोजेबल कप्स एंड प्लेट्स आर आल्सो मेड फ्रॉम पॉलीस्टाइरीन. दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक इज नॉट रिसाइक्लेबल. द लास्ट टाइप, आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So polycarbonate. Polycarbonate is a high-performing thermoplastic that is widely used in building and construction products, from windows and skylights to wall panels and roof domes to exterior elements for LED lights. आप लोगों ने बिल्डिंग्स में देखा होगा, ये इस तरह का आप लोगों ने देखा होगा. कुछ कार्स में भी इस तरह का एक शीशा ऊपर से लगा होता है
so you can have the natural light. देखा है बेटा? Yes, sir. देखिए इसमें अभी ऊपर से नेचुरल लाइट, यू कैन हैव द नेचुरल लाइट, और बारिश वगैरह होती है, सो इट कैन रेजिस्ट, इट कैन स्टॉप द रेन वाटर फ्रॉम कमिंग इनसाइड. ये देखिए ये दूसरा है. इट इज आल्सो यूज्ड इन मेडिकल इक्विपमेंट्स. मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी आप इसको यूज कर सकते हैं. एंड इट इज डिफिकल्ट टू रिसाइकल. So this is all about the types of plastics. I hope you have enjoyed this. समझ आ रही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. Okay. Should I continue or let's have a 5-minute break? क्या करें? Yes, sir. Sir, continue. Continue, sir. Continue, sir. सर कंटिन्यू करें सर जी. ठीक है बेटा, आप लोग भी तक गए हैं मेरे ख्याल में. सर नहीं थके. खत्म करना चाहते हैं? No, sir. No, sir. जी. अभी इतना टाइम नहीं हुआ इसलिए ब्रेक नहीं देते. Okay, so सर ये इंटरेस्टिंग है सर, हम एंजॉय कर रहे हैं सर. अगर आप कंटिन्यू कर दें तो सर बेटर होगा. ओके बेटा, सो लेट्स कंटिन्यू. प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक. इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन से होनी चाहिए? अभी तो हमें टाइप्स का पता चल गया, बेसिक प्रॉपर्टीज का हमें पता चल गया. नाउ व्हेन वी विल गो फॉर द सिलेक्शन ऑफ दीस थिंग्स और दीस प्लास्टिक्स, सो व्हिच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज वी विल look for. That is, each plastic material has its own peculiar properties, specific properties to suit its particular uses. The success of plastic as an engineering material will depend upon the selection of the variety of plastics. If you can select a proper material, so your structure will be more durable and can work for a long time, and can give you the proper requirements, can fulfill your requirements of the projects. Following are the general properties of plastic. Number 1, appearance, aesthetic appearance. के नजर किस तरह है. Chemical resistance, how it works as a chemical, how it can resist the chemicals. Dimensional stability, how it can maintain its volume. Ductility, durability, electrical insulation, finishing, fire resistance, fixing, humidity, maintenance, melting point, optical property, recycling, sound absorption, strength, thermal property, weather resistance, and finally the weight. So when you will study all these properties, then you will be able to select the proper material, the proper plastics. So let's talk about the appearance of plastics. Appearance क्या होता है बेटा? आउटलुक. आउटलुक. तो बाहर से अगर कोई बंदा इसको पहली नजर में देखता है तो they can attract the people that towards itself. In the market, there are so many types of models. Models of plastics are available, such as transparent, colored, etc. Suitable pigments are added in the process of manufacturing of plastic materials to get these different properties. मुख्तलिफ किस्म के pigments, colors आप इसमें डालते हैं जब आप प्लास्टिक बनाते हैं, और उस हिसाब से आप उसके कलर्स बना सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से. So these will give good appearance to the structure and makes it attractive. आप अपनी मर्जी के कलर्स, जिस तरह मैंने आपके पहले क्लास या दूसरे क्लास में आपसे कलर्स के बारे में पूछा था कि which one color you like, या याद है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The required color for your project. Number 2 is the chemical resistance of plastics. Plastics offer great resistance against chemicals and solvents. Chemicals or solvents against the highly resistant. Chemical composition of plastics during manufacturing will decide the degree of chemical resistance. When you are making these plastics, over there you can add such materials, or you can make such plastics which can resist chemically. Most of the plastics available in the market offer great corrosion resistance. Yeah, it is also corrosion resistance. So corrosive metals are replaced by plastics
in the case of water carrying pipes etc. आजकल अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जो मोस्ट ऑफ द पाइप बिल्डिंग में जो पाइप यूज होते हैं वो प्लास्टिक के यूज होते हैं। पहले कौन से यूज होते थे, किसी को याद है? सर स्टील के। हाँ, जीआई पाइप्स या स्टील के पाइप पहले यूज होते थे। तो उसमें करोजन होती है। ये जो पुराने वाटर सप्लाई सिस्टम है आप लोगों ने देखा होगा सिटीज में और गांव के इलाकों में, वहाँ पे जो पाइप्स होते हैं वो जीआई पाइप्स होते हैं और खास अरसे के बाद उसमें करोजन अकर होती है और उसमें वही पानी जब आप पीते करोजन वाला तो दैट इज कंटामिनेटेड वाटर। ओके, डायमेंशनल स्टेबिलिटी की तरफ आ जाते हैं और वॉल्यूमेट्रिक स्टेबिलिटी की तरफ। दिस इज द थर्ड वन प्रॉपर्टी ऑफ द प्लास्टिक ओवर हियर। Thermoplastics types of plastics can be easily reshaped and reused। आपको मैंने कहा था कि वो प्लास्टिक जो हीट करने से आप उसको फ्लेक्सिबल बनाते हैं, वो उसकी रीमोल्डिंग कर सकते हैं, उसकी रीशिपिंग कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द थर्मोप्लास्टिक। बट थर्मोसेटिंग कौन सी है ये? बट इन द केस ऑफ थर्मोसेटिंग टाइप प्लास्टिक्स it is not possible to reshape or remold the material। ये जब सख्त होता है, दिस कुछ प्लास्टिक इसमें सॉफ्ट नहीं होते हैं, उसको आप रीमोल्ड नहीं कर सकते, रीशेप नहीं कर सकते, तो उसकी जो डायमेंशन स्टेबिलिटी है, वॉल्यूमेट्रिक स्टेबिलिटी है, वो मेंटेन रहती है। तो यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंगली। डक्टिलिटी ऑफ प्लास्टिक्स, आई होप you know about ductility and brittleness। Ductile nature of plastic is very low। Plastics are not ductile। When tensile stress are acting on plastics members, they may fail without any prior indication। Plastics के जो materials आप बनाते हैं, when you are applying load on it and when the load is increasing from the design strength of these pipes, what will happen? ये abruptly fail होगा, एकदम खत्म हो जाएगा, एकदम फेल हो जाएगा। ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्लास्टिक की तरफ आते हैं बेटा। प्लास्टिक्स विद सफिशिएंट सरफेस हार्डनेस आर हैविंग गुड ड्यूरेबिलिटी। सफिशिएंट सरफेस हार्डनेस जिसमें मौजूद होती है जिन प्लास्टिक्स में, दे आर मोर ड्यूरेबल। समटाइम्स प्लास्टिक्स में बी अफेक्टेड बाय टर्माइट्स एंड rodents, especially in the case of thermoplastic type। टर्माइट्स क्या होते हैं बेटा? इंसेक्ट्स होते हैं सर। या insects are venom and rodents क्या होते हैं बेटा? जी हारिस अब्दुल्ला। सर रोडेंट, सर चूहे वगैरह सर। तो ये चूहे क्या करते पाइप के साथ? बाकी लोग अपने माइक बंद कर दे। हारिस अब्दुल्ला आप बताएं। सर टर्माइट्स सर इंसेक्ट्स होते हैं और रोडेंट्स सर एनिमल होते हैं सर, ये छोटे छोटे से चूहे वगैरह। तो चूहे क्या करते हैं पाइप्स के साथ, उनका क्या काम होता है? पाइप्स को कुतरते हैं सर। पाइप को काटते हैं। जी सर। ये जो सिटी एरिया में गवर्नमेंट ने एक वो भी मुहिम भी शुरू किया हुआ था, क्योंकि वहाँ पे काफी बड़े बड़े वो थे, चूहे थे। तो ये जो खासकर ये जो थर्मोप्लास्टिक टाइप की पाइप है, इसको स्ट्रेट अवे पूरा पाइप कहा जाते हैं, thermoplastic types। However, it is not a serious problem because of no nutrition values in plastics। बस वैसे वो कहा जाते हैं, अदर चीज में न्यूट्रिशन वो नहीं है उनके लिए, लेकिन बस अल्लाह का निज़ाम है कि चूहे इन पाइप को कहा जाते हैं। So we will have to take care with these things। Electrical insulation। Plastics are good electric insulators। So they are used as linings for electric cable। इलेक्ट्रिक केबल के ऊपर आप लोगों ने प्लास्टिक देखा होगा, वो जो ब्लैक किस्म के, रेड किस्म के जो प्लास्टिक उसके ऊपर नजर आते हैं, so that is working as insulating material। And for electronics tools में भी आप लोगों ने देखे होंगे। So plastics can work as insulating material। फिनिशिंग पे बात करते हैं। Any type of finishing treatment can be given to the plastics।
Finishing treatment, you can give any finishing treatment to the plastics. Mass production of plastics particles with uniformity of surface finish is done by having technical control during manufacturing process. जब आप फैक्ट्री में इसको मैन्युफैक्चर करते हैं तो इसकी जो स्मूथनेस है और फिनिशिंग ऑफ द सर्फेसेस है वो आप इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं. Number 8 is the fire resistance. The resistance to temperature or fire for varieties of plastics considerably varies depending upon the structure of the plastics. Plastics made of cellulose acetate are burned slowly. जो cellulose acetate से जो प्लास्टिक बने होते हैं वो slowly burn करते हैं. PVC made plastics do not catch fire easily. जो polyvinyl chloride के जो प्लास्टिक्स है उसको आसानी से आग नहीं लग सकती है. Plastics made of phenol formaldehyde and urea formaldehyde are fireproof materials. इन दो मटेरियल से जो प्लास्टिक बनता है that is fireproof. So you will have to take care of this property as well. Fixing, how you can fix these plastics products. So fixing of plastic materials is very easy. You by yourself or your laborers can do this, your workers can do this for you. We can bolt them easily, we can drill them easily, and we can glue them easily to fix plastic materials position. जहाँ पे आप लगाना चाहते हैं वहाँ पे बड़े आसान से आप इसमें नट एंड बोल्ट लगा सकते हैं, बोल्ट लगा सकते हैं, ड्रिल करके सुराख करके उसमें वो फिर बोल्ट लगा सकते हैं. हाँ, और उसमें ग्लूज के तौर पे गोन वगैरह से भी आप उसको लगा सकते हैं. ह्यूमिडिटी, आवाज आ रही है बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. The plastics made up of cellulosic materials are affected by the presence of moisture. The plastics made of polyvinyl chloride pipes offers great resistance against moisture. So cellulosic material से बने होते हैं वहाँ पे moisture can enter and can affect the area or that place. जबकि polyvinyl chloride से जो बने होते हैं that can resist against the moisture. Maintenance की बात करते हैं बेटा कि आप उसको maintain कैसे करेंगे. So maintaining of plastics are very simple because they do not need any surface finishing coats or paints etc. किसी चीज की भी जरूरत नहीं है. प्लास्टिक आप इस्तेमाल करें और उसको मेंटेनेंस की इतनी जरूरत नहीं होती है जिस तरह हमारे बाकी स्ट्रक्चर्स को होती है. कमिंग टुवर्ड्स द मेल्टिंग पॉइंट, आप सोचते होंगे कि जी इसका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत कम होता है, इसको तो फायर बहुत ज्यादा खराब करेगा. So generally plastics have very low melting point. Yes, you are right. Some plastics may melt at just 50 degrees C. So they cannot be used in the positions of high temperature. जहाँ पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर के चांसेस हो या किचन वगैरह में आप जहाँ पे आपके आग वगैरह जलाते हैं उन जगहों पे पर आप इस तरह के मटेरियल यूज ना करें जिसकी मेल्टिंग पॉइंट कम हो. ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की तरफ आ जाते हैं बेटा. There are so many types of plastics. Some plastics are transparent, which allows light in its original direction, and some are translucent. I hope you remember these transparent and translucent. Nothing but semi-transparent, which allows light but changes light rays direction. So this property is also there in the plastics. Recycling of plastics. This is very important for sustainable environment. Disposal of plastics in the environment causes severe pollution. Disposable is not a serious problem because of its recycling property. प्लास्टिक के लिए चूंकि आप इसको रिसाइकल कर सकते हैं तो इसके लिए disposable is not a big issue. We can use plastic waste disposal conveniently to produce drainage pipes. आप इससे बना सकते हैं. Fencing आप इससे कर सकते हैं. Hand rails इससे बना सकते हैं. कारपेट्स में यूज कर सकते हैं. बेंचेस आप इससे बना सकते हैं. काफी सारी चीजें आप इससे बना सकते हैं. एंड दिस इज द स्ट्रक्चर, यू कैन रीड इट हाउ यू कैन रिसाइकल द प्लास्टिक. तो बेटा व्हेनेवर यू आर इन योर हाउसेस, इन यूनिवर्सिटी, इन योर हॉस्टल्स, तो आप लोग हर जगह पे जो प्लास्टिक के बॉटल्स है, जो प्लास्टिक के बाकी मटेरियल है, इसको आप हर जगह पे न फेंके. कोशिश करें डस्टबिन में चीजें डाला करें, बल्कि आजकल तो मुख्तलिफ जगहों पे वो सेपरेट भी करते हैं कि कौन सा बॉटल आपने कौन से डस्टबिन में डालना है. इन चीज़ों का आप ख्याल करें. बीइंग सिविल इंजीनियर और बीइंग
हाईली क्वालिफाइड पीपल, आप लोगों ने इन चीजों का ख्याल करना है। ओके, साउंड एब्जॉर्प्शन बाय द saturation of phenolic reasons we can produce acoustic boards। acoustic boards भी आप इससे बना सकते हैं। these acoustic boards, ये जो पैनल्स होते हैं, are sound absorbent and provide sound insulation। ये साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं और साउंड इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर में। जनरली फॉर ये जो सिनेमा घर होते हैं, जो थिएटर्स होते हैं, जो हॉल्स होते हैं, सेमिनार हॉल्स होते हैं, दिस टाइप ऑफ एकॉस्टिक सीलिंग्स आर यूज्ड। आपके अपने क्लासरूम में भी जो सिविल डिपार्टमेंट में है, आप लोगों ने देखा होगा, दिस टाइप ऑफ सीलिंग इज यूज्ड। Coming towards the strength, being civil engineers, we are always interested in strength and durability. Practically, we can say that plastic is strong material, but ideal section of plastics which is useful for structural component is not designed yet. Generally, by reinforcing fibrous materials into plastic improves its strength. अगर आप फाइबर्स इसमें डाल दें, मुख्तलिफ किस्म के फाइबर्स आजकल अवेलेबल हैं, so when you are adding those fibers in this materials, you can make it more stronger. If the strength to weight ratio of plastic is same as metals, then also we cannot give preference to plastics because of various reasons like heavy cost, weak flavor may occur, poor stiffness and sensitive against temperature. So strength के मामले में जिस तरह हम बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं इससे, उसमें थोड़ा सा भी काम रहता है कि लोग काम कर रहे हैं, कुछ जगहों पे उन्होंने इसको स्ट्रेंथन किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ एडिंग अदर मटेरियल्स, लेकिन इनकी अपनी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि इससे आप स्ट्रक्चर ब्लॉक बना लें, स्ट्रक्चर मटेरियल बना लें, बट यू कैन स्टिल प्ले विद दिस। थर्मल प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ प्लास्टिक इज वेरी लो एंड इज सिमिलर टू वुड। इस तरह टेम्बर की है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट इसकी भी है। सो फोम एंड एक्सपेंडेड प्लास्टिक्स आर यूज्ड एज थर्मल इंसुलेटर। इसको आप एज अ थर्मल इंसुलेटर भी यूज कर सकते हैं इस मटेरियल को। वेदर रेजिस्टेंस, अभी सीवियर वेदर को भी ये बर्दाश्त कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक्स एक्सेप्ट सम लिमिटेड वेराइटीज आर केपेबल of resistance against the weathering, the severe weather. But major problem in plastic is plastic when the plastics are exposed to sunlight, they are seriously affected by ultraviolet rays and gets brittle and it can crack. To prevent this, plastics are incorporated by fillers and pigments which helps to absorb or reflect the ultraviolet rays to surface. Yeah, you can play in this way. So how you can make them ultraviolet rays resistant, that you can add some pigments or some filler material in the plastics in the industry so that you can make it more weather resistant. The 19th number, that was the last property of the plastics in today's lecture, that was the weight of the plastics. The plastics have low gravity, generally ranging from 1.2 to 1.4. So they are light in weight and easily transportable to any place in a large quantity. आप इसको आराम से ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, इसको आराम से हैंडल भी कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। So this is a very good property because it has light weight. Coming towards the practical uses of plastics as construction material. Already you people have seen this. Plastics are used in sanitary equipments and piping such as, आप लोगों के साथ कल मैंने लिंक्स शेयर किए थे, I hope your CR have already shared with you. Sinks में यूज करते हैं, बाथरूम में, बाथ्स में यूज करते हैं, बेसन्स के तौर पे यूज करते हैं, शावर्स में, पाइप वर्क्स में ये सारे प्लास्टिक यूज होते हैं, फिटिंग में रिजिड पीवीसी पाइप फॉर ड्रेनेज एंड गटर्स, ये भी पीवीसी की यूज होते हैं। यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स इन रूफ कवरिंग्स, रूफ कवरिंग आप इसे कर सकते हैं, domes and lighting elements आप में यूज कर सकते हैं। Uses of plastics in interior covering, floors, walls, ceilings, doors, partitions, etc. में आप कर सकते हैं। Use as insulating material, ये insulation के तौर पर आप यूज कर सकते हैं। Use and cables, electric cables में आप इसको यूज कर सकते हैं। Okay, that's all about today's lecture. If you have any question, we can discuss. सर जी सर
सर ये जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं इनको जब हम लोग फायर के आगे पकड़ते हैं तो ये अगेन जो है वो मेल्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, बट सर जब हम इनके अंदर पानी डाल देते हैं और इसको फिर फायर के आगे रखते हैं तो फिर ये ऐसे नहीं करते सर, ये क्यों? पॉलिथीन बैग्स में क्या करते हैं बेटा, जब आग इसको लग जाती है तो ये इसकी मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर यस सर। और सर जब हम लोग इन्हीं बैग्स में पानी डाल दें तो फिर इसके बाद ये नहीं मेल्ट होते? I don't know what is the reason behind this. Anyone in the class who can tell us? जी सर पानी सर आई थिंक जो हीट होती है जी सर, जो पॉलीथीन बैग्स हीट एब्जॉर्ब करते हैं वो पानी उससे एब्जॉर्ब कर लेती है, इस तरह पानी की जो हीट एब्जॉर्प्शन होती है वो बहुत ज्यादा होती है, मेरे ख्याल में यही वजह होगी सर। अच्छा, इसके अलावा anyone else? सर बिल्कुल आप सर, इसको देख ज़ीशान ले की बात बिल्कुल ठीक है सर, क्योंकि सर जो पानी में हम इनको इंडोर्स कर देते हैं तो जो एब्जॉर्बिंग हीट कैपेसिटी है वाटर की वो काफ़ी ज़्यादा है सर, तो सारी हीट वही एब्जॉर्ब कर लेती होगी। और अगर सर हम ज़्यादा और टेम्परेचर दें तो उसके बाद ज़ाहिर बात सर वो मेल्ट हो सकती है। ठीक है, गुड, थैंक यू। ओके, anyone else, any other question? सर मैं सर एक क्वेश्चन पूछ रहा था सर, अगर हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर्स तैयार हुए सर बना सकते हैं सर प्लास्टिक में, जितने भी हम जो रिसाइकल करते हैं सर, ये जो डिस्पोजेबल चीज़ें होती हैं बिल्कुल सर, इनको हम मेल्ट जी जी, करके एक बिल्कुल ख़ास बिल्कुल जाविये में सर उन ऊपर उनकी रूफिंग वगैरह और exactly, पूरे के पूरे घर बना सकते हैं सर इनसे। और अगर हम बिल्कुल इनको बेटा, इंसुलेटेड कर दें सरफेस ऐसी चीज़ों से सर जो वेदर रेजिस्टेंट हो। बिल्कुल बेटा, मैंने एक लफ्ज यूज किया वहाँ पे कि यू कैन प्ले विद दीस थिंग्स, डू यू रिमेंबर दैट? सी ओवर हियर, ये आम बॉटल्स है, इससे दीवार बना रहे हैं, ये देखिए पूरा पूरा स्ट्रक्चर इससे लोग बनाते हैं, नजर आ रहे हैं सर बेटा? इनको ये सर इनको किसी चीज़ से फिल किया हुआ है सर लगता है। ये सैंड फिलिंग कर सकते हैं आप, सैंड फिल करके फिर दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है, मट्टी डाल सकते हैं, काफी सारा काम कर सकते हैं। आजकल ज्यादातर लोग इसी साइड पे आ रहे हैं, ये रिसाइकलिंग मटेरियल्स पे काम कर रहे हैं काफी सारे लोग।